Okay, so today we are going to discuss about the transport. So basically transport is subdivided into two parts. So here the part one can be long distance transport, and other can be short distance transport. Okay, so long distance transport is basically done by the xylem and phloem. While the short distance transport is again divided into three parts. Number one can be diffusion process with the help of diffusion, another can be osmosis, and third is active transport. Okay, so these three are basically the short distance transport. So the diffusion is again divided into two parts. Number one is simple diffusion and other is facilitated diffusion. So here osmosis basically means the move of water का move होना high region of its higher concentration to the region of its lower concentration. Means water अपने ही higher concentration से move करे दूसरे की lower concentration. Water moves from its region of higher concentration to lower concentration. Okay, so and now we are going to discuss about some terms that are helpful in the fluid mosaic model, that are uniport transport, second is symport transport, and third we have rhematic antiport transport. Okay, so now you can easily understand, like here we have channels. If from the channels the substance is passing through this, ऊपर से नीचे अगर कोई substance आ रहा है एक ही डायरेक्शन में, so that is uniport, because uni means one direction, port means transport होना, so एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, that is uniport, and that is basically transported by uniporter protein. ओके, सो यूनिपोर्टर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस. और अगर हम बात करें सिम्पोर्ट की, सो हियर वी हैव वन अगेन चैनल. सो सिम्पोर्ट में दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट occur होती है. सिम मीन्स टू एंड पोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट. सो अगर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो, मीन्स इस दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ही एक पाथ में जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं सिम्पोर्ट. और सिम्पोर्ट का बेसिकली दूसरा नाम, सेकंड नेम वी कैन से इज co-transport is also known as the symport, or this is the active process in which both the transports are coming in the same time on the same sequence. Okay, so if I talk about the antiport transport, so this is basically, so a antiport, this is like this, another is like this.
means both are going in opposite direction, so that is antipode transport. So this is also the active process, mostly active but sometimes it is also passive process. अब इसमें क्या होता है कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन ओकर होती है. जैसे कि इफ आई डू टेल अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम को अंदर फेंकता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है. सो लाइक दैट एंटीपोड वर्क्स. सो ये थे हमारे पास 3 ट्रांसपोर्ट्स जो कि हमारी विच हेल्प अस इन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. सो नाउ अब हम बात करेंगे चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स. सो बेसिकली हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स and channel proteins. So in the carrier proteins we have, like for suppose here we have this head and tail. So here we have this. Let me draw the picture, then I'll explain you. So in the carrier protein basically what happened, हमारा जो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको करवाना होता है वो हमें पास आता है और फिर ये अपने आप को रोटेट करता है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है. जैसे कि आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ से आता है और अपनी ये पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है, फिर ये नीचे चला जाता है. तो कैरियर प्रोटीन ही ऐसे काम करते हैं ना. चैनल प्रोटीन्स ऑल्सो नोन एज, इसका हम सेकंड नाम कहते हैं टनल प्रोटीन्स. टनल प्रोटीन्स और हम इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन. ओके, सो बेसिकली प्रोटीन, चैनल प्रोटीन का काम क्या होता है? दे पास द वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड सब्सटेंस, पास वाटर मॉलिक्यूल्स, ions and different substance. क्योंकि because why we use this channel protein here, because as we all know that the mid between layer is called the lipoprotein, and the lipoprotein is basically the against of water. This layer do not allow the water molecules, so here we have different channels embedded, or some are completely and partially embedded so that the water molecules or ions go inside and come. So that's protein, channel protein has a lot. And now let me tell you that प्रोटीन की हमारे पास मूवमेंट कैसी होती है. प्रोटीन मूवमेंट इज लेटरल मूवमेंट. प्रोटीन मूवमेंट इज लेटरल. प्रोटीन की मूवमेंट लेटरल होती है. लाइक हाउ? सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको. यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसकी मूवमेंट ऐसे होती है, ऐसे लेटरल, इसी डायरेक्शन में होती है और जिसमें होती है. बट अगर हम बात करें हमारे पास जो ये हेड और टेल हैं फोस्फोलिपिड्स की, इनके अंदर हमारे पास मूवमेंट कौन सी होती है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन सी है? लाइक ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ. दिस कैन गो हेयर एंड हेयर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फ्लूइड है जो कि इसको रोटेशन करवाने में मदद होता है. ये एक्सचेंज हो जाती है. दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. बाय बाय.